Hello everyone, welcome to my channel Amanat and Gurbeer APS. So everyone, in this video we are going to start with the class 6 chapter number 6 Civics रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो सिविक्स सब्जेक्ट करेंगे आज हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. इन दिस चैप्टर बेसिकली वी लर्न अबाउट लाइक इन द रूरल एरियाज, यानी गाँव में जब कोई भी डिस्प्यूट होता है, क्वारल्स होती हैं, तो वो किस टॉपिक को कॉमनली लेकर होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैंड. ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल दैट ही हैड इंक्रीज द बंद, दैट माई लैंड वॉज बिगर एंड नाउ माई लैंड इज स्मॉल, ही हैड इंक्रीज द बंद. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ क्वारल्स आर देयर, डिस्प्यूट्स आर देयर बिकॉज ऑफ लैंड कॉमनली. एंड अब इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे कि रूरल एरियाज़ में, गांव में जो लैंड का जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है पूरा अच्छे से, एंड क्या क्या लैंड में लैंड को लेकर रूरल एरियाज़ में क्या क्या होते हैं, सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले एक स्टोरी आई विल टेल यू. So in that story what happens is, once upon a time there is a Mohan. Okay, Mohan and Raghu. Okay, there are two characters in the story, that is Mohan and Raghu. Okay, now once upon a time Mohan went out for a few days, okay, for traveling. Okay, and now रघु वॉच दैट अब मोहन तो यहाँ पे है नहीं. रघु ने सोच लिया कि मोहन तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो बहुत दिन से रघु मोहन को देख नहीं रहा था, और मोहन का घर भी एकदम क्लोज था, लॉक था. तो रघु वॉज वेरी क्लेवर. अब रघु ने सोचा कि क्यों ना मैं बंद जो है उसको थोड़ा आगे कर दूँ ताकि मेरा लैंड बड़ा हो जाए. अब देखो, मैंने बंद बोला. बंद क्या होता है? व्हाट इज़ बंद? ना अब देयर इज़ अ लैंड. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इतना लैंड उसका, इतना लैंड उसका? नो, एक लाइन होती है जो सेपरेट करती है, और उस लाइन को कहते हैं बंद. ठीक है, सो लाइन दैट सेपरेट अ लैंड इनटू टू इज नोन एज बंद. ठीक है, तो रघु ने क्या किया, रघु ने वो बंद थोड़ा आगे को कर दिया, तो रघु का लैंड बड़ा हो गया और मोहन का छोटा. तो आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन मोहन केम बैक, सो व्हाट ही नोटिस्ड वाज दैट द बंद हैड इंक्रीज्ड. तो मोहन का लैंड छोटा हो चुका था और रघु का बड़ा. तो मोहन को लगा कि रघु ने जो बंद है उसको हिलाया है. ओके, नाउ रघु, अब जो मोहन था, अब मोहन ने सोचा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मोहन वॉज अफ्रेड टू गो एंड टेल ऑफ रघु, बिकॉज जो रघु था उसके पास बहुत सारे कंट्रोल में थे, मतलब उसकी पहचान में बहुत सारे लोग थे. ऑल द ठीक है, यस, उसकी पहचान में बहुत सारे लोग थे. एंड जो रघु के अंकल थे वो सरपंच थे विलेज के. ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को वो जानता था. इसलिए अब उसने सोचा कि अगर मैं कहूँगा तो फिर वो सरपंच भी उसकी साइड लेंगे, तो इसलिए मेरी कोई सुनेगा नहीं. बट फिर भी मोहन ने सोचा कि मैं चाहता हूँ. ठीक है, मोहन स्टिल जस्ट वेंट एंड देन ही सेड टू रघु दैट यू हैव इंक्रीज द बंद एंड लाइक दिस एंड ऑल. तो ऐसे एक फाइट हो गई, एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, सब लड़ने लग गए और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए. ठीक है, so due to this everyone was fighting. Okay, so when Raghu and Mohan was fighting, Mohan was injured too much. So when all the neighbors came out, so उन्होंने पूरा मोहन को बाहर निकाला, उनको फर्स्ट एड दिया, बिकॉज मोहन के हैंड पे अच्छे से लग चुकी थी, बहुत दर्द हो रही थी. ही वॉज वेरी इंजर्ड ऑन हिज हैंड. ठीक है, तो इसलिए एवरीवन गिव फर्स्ट एड टू मोहन. ठीक है, अब फर्स्ट एड देने के बाद अब सब बात करने लग गए कि हम करें क्या, जो अब लैंड का डिस्प्यूट हुआ है तो इसके लिए हम क्या करें. तो दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन. ठीक है, पुलिस स्टेशन जब वो जा रहे थे तो वन सेड दैट वी शुड गो द मेन पुलिस स्टेशन, नॉट द पुलिस स्टेशन विच इज़ इन आवर एरिया. ठीक है, बट अब वॉज इट राइट, मतलब वो जिस विलेज में रहते थे उनको उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए कि मेन पुलिस स्टेशन में, दूसरे किसी और पुलिस स्टेशन में? नो, दे शुड गो इन द पुलिस स्टेशन इन द विलेज वेयर दे लिव.
ठीक है। तो हर पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में थोड़ा सा एरिया होता है और उस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में उनका विलेज था, ठीक है। तो अपने आपके विलेज में जो सा पुलिस स्टेशन होता है आपको उसमें जाना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन दे वेंट टू दैट पुलिस स्टेशन, सो देयर वर द SHO. Who was SHO? SHO is the station house officer. Okay, he is the in charge who write complaints and all of the police station, ठीक है। So work at the police station, it is there in this topic. Okay, so they went to the SHO, okay, and then they told that write the complaint, okay. So but the SHO told that I'll not write your small and unnecessary land complaints, okay. Now yes, SHO rudely said, okay. Then but was it right? SHO should write now. Yes, SHO should write the complaint, but he haven't wrote, okay. So then Mohan showed him his injuries, okay. Mohan showed him in all the injuries. He showed that now I am too much injured, okay, and the land dispute is also there, so you are requested to please write the complaint, okay. But still the SHO वो माना ही नहीं SHO, ठीक है। तो everyone convinced SHO, सबने कहा कि they argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him would have been injured very seriously. अब उन्होंने कहा कि मोहन उनके सामने इंजर हुआ और अगर वो मोहन को बचाते ना तो मोहन को और भी ज़्यादा लग सकती थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया SHO को टू राइट द कंप्लेंट, ठीक है, टू रजिस्टर द कंप्लेंट, ओके। एंड फाइनली जो ऑफिसर था वो मान गया, ठीक है। सो मोहन ने राइट कंप्लेंट लिख दी, ठीक है। और फिर जो SHO था उसने कंप्लेंट भी पढ़ ली एंड SHO टोल्ड देम टू द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कंस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। कंस्टेबल क्या होता है? वो जो हवलदार कहते हैं ना हिंदी में, लाइक दैट, इट्स द सेम, ठीक है। तो he will send the constable to the village to investigate tomorrow, okay. Next day he'll send. Next, maintenance of land records, okay. Now in the village, if there is any land dispute, then they should go to the patwari, okay. Yes, patwari. Who is patwari, everyone? I hope that you may have heard the name of patwari. Patwari is the person who keep all the land records in the sense like now if there is a land, okay, everyone has a small piece of land. Now how will get to know that this much space, this much this much length is of that person, this much length is of that person. Now there is a person, पटवारी, who keep the land record, ठीक है। अब पटवारी के पास एक पूरा रजिस्टर होता है जिसमें वो सारे लैंड रिकॉर्ड्स करता है पूरे नेम्स के साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल रघु का इतना है, मोहन का इतना लैंड रिकॉर्ड है, देन अमित का इतना है। तो बहुत अलग अलग लैंड रिकॉर्ड्स पटवारी रखता है, ठीक है। पटवारी के पास सारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, जब पटवारी सारे लैंड रिकॉर्ड्स रखता है तो पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कुनाओ और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है अभी तक कि ये कि पटवारी को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंट नेम्स होते हैं? लेखपाल, कर्मचारी, कानूनंगो, देन विलेज ऑफिसर, ठीक है, एक्सेट्रा। देन वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, ठीक है। पर हम इसको क्या बोलते हैं? पटवारी, ठीक है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। अलग अलग विलेजेस के ग्रुप का एक एक पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पटवारी मेंटेन्स द एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, आई टोल्ड यू राइट नाउ, ठीक है। नाउ the map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by पटवारी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेज है here ऐसे होते हैं, खसरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। इस टाइप के जो रिकॉर्ड्स हैं ये पटवारी रखता है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन दैट पेज ओनली।
Now, the Patwari usually has ways of measuring agricultural fields. Okay. Now, okay, then. Now, in some places, a long chain is used, and in the above instance, the Patwari would have measured both. Yes. Now, अब अगर if they would haven't gone to the police station, so they would have gone to the Sarpanch, and Sarpanch would have called the Patwari. Okay, then what Patwari would have done? Patwari would have just measured both the lands. Okay, and then he would get to know that who had increased the bun, and whether the measuring is correct or not. Okay, so Patwari is only responsible for all of these things, and Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. ठीक है हाँ. Now land revenue क्या होता है? Revenue tax, revenue या फिर tax they both same होते हैं. ठीक है, तो land revenue और tax मतलब now the land now the government is providing us with too much facilities. Yeah, so अब बहुत सारे taxes होते हैं, house tax, water tax, then तो house tax, water tax and बहुत सारे taxes होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू. ठीक है, अब जैसे हाउस रिवेन्यू होते हैं या फिर वाटर रिवेन्यू होते हैं, ठीक है, वैसे ही लैंड रिवेन्यू भी होता है, और पटवारी क्या करता है? लैंड रिवेन्यू. ठीक है, तो पटवारी के दो वर्क अभी तक हमने पढ़े. पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू एंड ही मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, नाउ this is done from the records that are kept, and this is why it's important for Patwari to regularly update these. Okay, and farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. Okay, so ये खसरा record है. Okay, and you can just see this, and some questions are there. You may do it by yourself because everything is explained. So here we'll start from here now. Wait. Okay. Farmers often require a copy of their land records together with a map. ठीक है, yes, now Patwari have their land record, but still farmers should also have the copy of their land record. Okay, they should have the copy of their land record. Okay, and together with the map that I showed you, this together with the map also. ठीक है, this is also the map. Okay, now next, they have a right to this information, and they may have to pay a small fee for this. Okay, now however this information is not easily made available, and farmers sometimes have to face many problems to get it. Yes, it's the correct thing. And in some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office, so that they are more easily available and regularly updated. Yes, now everyone a Patwari वैसे तो in the modern days, nowadays in some states all the records are being computerized. ठीक है, अभी इस चैप्टर में in the rural areas still पटवारीज होते हैं. ठीक है, जो पेपर्स पे लैंड रिकॉर्ड्स करते हैं. बाकी वैसे कुछ स्टेट्स में अभी कंप्यूटराइज हो चुके हैं. कंप्यूटराइज पे गलत भी नहीं हो सकता और रेगुलरली अपडेटेड भी रहेगा. ठीक है, और पंचायत ऑफिस में रहते हैं जो स्टेट्स में कंप्यूटराइज्ड होते हैं. नेक्स्ट, नाउ और आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर जो फार्मर्स होते हैं उनको इस रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होती होगी? यस, श्योर चाहिए होती होगी. ठीक है, नाउ a farmer wants to study the following situations and identify the cases in which these records would be necessary and why. Okay, a farmer wants to buy a plot of land from another. ओके, अब आपको लैंड का थोड़ा सा पार्ट लेना है किसी और के लैंड से, तो क्या वुड यू रिक्वायर लैंड रिकॉर्ड? Yes, sure will require, because now in our land record, for example, okay, I'm saying for suppose if my land is
if my land is 8.10 uh, 8.10 meter, ठीक है, my land is 8.10 meter, okay, and I want to buy 6.4 meter. Okay, now for this I will need one I will need my the copy. Yeah, I'll need the copy now um, of my land record. Yeah, why? Because I need to then extend the land. I need to write the correct record now, whatever it is. I have to need to update it. Yeah, so yes, it would be needed. And the farmer wants to sell her produce to another. आपको आपके लैंड में जो भी प्रोड्यूस उगा है, ठीक है, सो आपको बेचना है, तो वुड यू रिक्वायर? नो. ठीक है, no. Then a farmer wants to purchase fertilizers for his field. Not at all. Next, a farmer a farmer wants to divide his property among his children. Yes, sure, he will require. ठीक है. Okay, next, this is left. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. ठीक है, अब पटवारी जो काम करता है उस पटवारी के काम को देखना भी तो है ना कि पटवारी सही कर रहा है कि नहीं, तो उसको सुपरवाइज कौन करता है? सीनियर पीपल. ठीक है, और सीनियर वो सीनियर पर्सन है कौन, उसका नाम भी इसमें है भी. आई टेल यू नाउ ऑल स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, अब सारे स्टेट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. ठीक है, अब देखो जैसे आपने ले लिया इंडिया. ठीक है, अब इंडिया डिवाइडेड है बहुत सारे कंट्रीज़ में. ठीक है, सॉरी कंट्रीज़ नहीं, सॉरी स्टेट्स में. ठीक है, स्टेट्स, अब उसमें दिल्ली आ गई. अब दिल्ली भी और जगहों में डिवाइडेड है. ठीक है, अब एक तिलक नगर है, एक रजौरी गार्डन है, एक बहुत सारी जगह है ना, विकासपुरी है. सो देयर आर मेनी ऑफ द प्लेसेस. ठीक है, नाउ these subdivisions of a district are known by different names such as tehsil, taluka, etc. At the head of this district collector and under her are the revenue officers. ठीक है, and what are those revenue officers known as? तहसीलदार. ठीक है, तो पटवारी से सीनियर मिनिस्टर जो पटवारी को सुपरवाइज करता है वो है तहसीलदार. ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. वो डिस्प्यूट्स भी सुनते हैं लोगों के तहसीलदार. दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड दे आर अपडेटेड ऑल्सो रेगुलरली. ठीक है, नेक्स्ट, दे मेक श्योर, वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि दैट द फार्मर्स can easily obtain a copy of their record. ठीक है, because records की copy होनी ज़रूरी है. That's why they also ensure that farmers can easily obtain that. Okay, next, the Tehsildar's office is where land disputes are also heard. ठीक है, now next page नहीं. Okay, now a daughter's wish. Here is a poem. Okay, and I tell you, and you also have to just think that why this poem is written, what's the correct motive. Now, father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother, but what about me and my mother to accept a share in my father's home? It's not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. ठीक है, तो अब in this poem, what is it? In this poem he's saying there is a girl. Okay, there is a girl and she is saying that everyone says that my father, अब उसके फादर के पास जितना भी लैंड है, okay, now his father gave all that land to his son, okay, to the brother of that girl. Okay, but now she is saying that, but if the land will given to my brother, then what about my mother and me? Yeah, she is saying like this. Okay, because in the rural areas now it's still done that the boys they just get the lands. Okay, land, and they are not just allowed to do all of these works like the
at the previous time, though, it was there that they were only allowed to study also, but now girls can study. Okay, but still in the rural areas, still the boys only, where the boys, the uncles, okay, so they only get the lands. Okay, they are only they only do the work that is like the shops one. Okay, jobs and all. Okay, so they only do these are all the things, and the girls just do the food one, the kitchen, and they look at their homes. Okay, so but the girl is saying that if the land will be given to my brother, then what is about my mother and me? Okay, she want a land of her own. Okay, yeah, in which that is her property, she wants that. Okay, she want that she have the right, she didn't have the right to take the land, but she want the land, okay, of her own. Okay, she don't want any the silk, gold. Okay, she just want her own piece of land, and it's very important because in case if his brother also dies, okay, his father dies, his brother dies, okay, now just the sister and his mother is left, but they don't have a piece of land. Okay, now what will happen of theirs? Now if they don't have a piece of land, and now where they will stay? Yeah, so that is very difficult now. So one should have their own piece of land. Okay, now let's move. A new law. Now, Hindu Succession Amendment Act 2005. What is it? Often when we think of farmers who own land, we think of men. Okay, women are seen as people who work on the fields, but not as people who own agricultural land. Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After death of the father, his property was divided equally only among his sons. ठीक है, तो देखो now अब कभी भी, now even you also, you just think of farmers. Okay, I'm giving a work that you have to think of farmers, and while thinking of farmers, you will just imagine the picture of a boy. Okay, not of a girl. Okay, because and it's only the correct one. Okay, yeah, we will imagine the picture of a men. Okay, and women's why can't we see women's? Okay, because they work on fields. Okay, they don't have their own piece of land, because men have their own piece of land, the women they don't have. Okay, like we read right now. Okay, and they're also saying us that recently, okay, in the Hindu states, okay, in the states, in some states, Hindu women did not get the share in the family in the agricultural land, and after the death, the father of that family had death. Okay, now after father, the property was equal divided into among his sons. Okay, now the property was divided among his son. Now the girls, the women, they didn't got anything. Okay, now the law was changed. Okay, now in the new law, what was there? The daughters and their mothers in the Hindu families can get an equal share in the land. Now what happened earlier? Just the boys, the men got the land. After father, the boys, the sons of the father. Okay, this happens. Okay, but now the law was changed. Hindu Succession Amendment was there. Okay, the name of the law. So what the law was changed? What was changed there? That the Hindu women's they can get an equal share in the land. Okay, now in the same law will apply to all states and union territories of the country. Okay, now this law will benefit a large number of women. Yes, it's correct, this law will benefit a large number of women. For example, the Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and lives in a neighboring village. Okay, after her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. Okay, so now yes, this can also ask that who was Sudha. Okay, she was the eldest daughter of an agricultural family. Now, her mother asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names. Okay, so her mother, Sudha's mother, asked the Patwari that he had to transfer the land.
To whom he had to transfer the land? He had to transfer the land in all of the children. Okay, so yes, transfer the land and enter the name, her name, along with the names of all the children in this record. Okay. Now Sudha's mother confidently organizes the farming, okay, with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her शेयर ऑफ लैंड. ठीक है, तो अब जो सुधा है वो भी एक उसके पास भी एक श्योर होती है ना, वो मतलब उसके पास भी एक तसल्ली हो गई उसको कि मेरे पास भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास एक खुद का पीस ऑफ लैंड है. ठीक है. तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट की वजह से, एक न्यू लॉ की वजह से जो सुधा थी उसको भी वो टेंशन फ्री हो गई थी, उसको तसल्ली हो गई थी कि यस आई हैव माय ओन पीस ऑफ लैंड, ओन शेयर ऑफ लैंड, इफ एनी केस ऑफ प्रॉब्लम आई कैन डू. ओके, बिकॉज ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005. ठीक है. नेक्स्ट, other public services survey. Okay, this box you can read it by yourself, nothing that much important here. Now this, there is also nothing important. Here are the question answers. Okay. Question answers we'll do in the next video, not right now. So bye everyone, till the time, like, share and subscribe. Bye.